Hi friends, this is Dr. Sheetal Agarwal, Senior Consultant Obstetrician and Gynae from Apollo Spectra and Rosewalk Hospital. I'm meeting you again, and this time I have come to you with a very controversial topic: menopause and sexuality. While during lockdown I had received lots and lots of requests from my audience कि ma'am, we have attained menopause and we are having sexual problems. So I thought, let's go live and try to solve all these problems of my audience. First of all, I would like to tell you what exactly is menopause. Menopause is cessation of periods. That means when a lady stops her menses for a minimum of 6 months, then we calculate that yes, she has attained menopause. That means if for a minimum of 6 months she does not have her periods, that means she has attained menopause. Now, how does it affect the lady? क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक मेनोपॉज होता है, तो उसके अंदर क्या दिक्कत आ सकती है? मोस्ट ऑफ ऑल जो मेरे को पेशेंट्स आकर बोलते हैं, लेडी हैज़ लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स. Suddenly she is very elated, वो बहुत खुश होती है, and then all of a sudden without any rhyme and reason she feels depressed, she feels like crying unnecessarily without any cause. उसको she becomes upset and she feels like crying. हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या बच्चों ने कुछ बोल दिया, she becomes very sensitive actually, और छोटी सी बात भी उसके मन को लग जाती है. This is very important symptom of menopause. Hot flashes. Hot flashes are very common in a lady who has reached menopause. By hot flashes I mean पूरा full AC चल रहा है and it is the room is very comfortable, chilled, cold. Yeah, even in cold weather, a woman suddenly feels that her cheeks are becoming hot, flushed, कान एकदम लाल हो गए हैं, गर्मी निकल रही है. These are hot flashes. So this hot flashes is again a very common symptom of menopause. Irritability, yes. A woman feels very irritable. छोटी छोटी बातों पे उसको irritation होती है. काम वाली बाई नहीं आई, she feel irritated. प्रेस वाली नहीं आई, she मतलब what I mean to say is very small issues, you know, जिनका otherwise she would not give any तवज्जुह to them, she feels irritated. And a very common symptom of menopause, which these ladies are not able to come and discuss it with their family members and with their doctor, is that these ladies generally they have lack of interest, especially in their sexual activity. There is just absolutely no interest. The sex life goes zero. So today I'm going to discuss with you why it happens, how it happens, what are the remedial measures we can take so that they can have normal sexual activity. What exactly happens? First of all, होता menopause किस age? Sorry, there was some problem. Menopause आता किस age में है? Normally menopause starts in actually 5 years before a woman hits menopause. She starts having perimenopausal symptoms. How does it happen? The period cycle becomes irregular. The duration of cycle, मतलब सब अगर पहले 1 महीने में आता था तो 1.5 महीने में 2 महीने में periods आने लगेंगे. That flow decreases. पहले अगर 5 दिन periods आते थे तो 2 दिन या 3 दिन periods आते हैं. So this is how, you know, from perimenopause she reaches menopause. Normal age of menopause is generally, I would say, 48 years से लेके 50 to 53 years तक a lady gets her menopause. उससे 3-4 साल पहले उसको perimenopausal symptoms हो जाते हैं. And these symptoms जो मैंने आपको बोली हैं, hot flashes, mood swings, irritability, lack of interest in any sexual activity, ये perimenopause से start हो जाती है. अब ये क्यों होता है? Normally a lady, in a female, there are 2 hormones, estrogen and progesterone. During menopause the estrogen level starts falling. एंड जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल फॉल करनी शुरू होती है, पेरीमेनोपॉज से स्टार्ट होती है, एंड वंस शी अटेन्स मेनोपॉज इट रीचेस एन एब्सोल्युटली लो लेवल्स, दीज सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग. तो हमें क्या करना चाहिए? हाउ डू वी एक्सप्लेन दीज सिम्टम्स? हाउ डू वी गो अबाउट, और इनको हम कैसे ठीक करें? नाउ व्हाई देयर अकर्स लैक इन सेक्शुअल एक्टिविटी? इट इज़ बिकॉज जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, the vagina becomes very dry.
Normally, vagina has a protective layer of fluid. It has its own ecosystem. It has its own ecoflora, which forms a protective layer inside the vagina, which lubricates the vaginal canal and which then helps in the sexual activity. Now, once the estrogen level falls, this vagina, this fluid, this protective lubricating fluid, it becomes less and less, making the vagina wall thin, atrophic, and the normal rugosities जो folds होते हैं vagina में धीरे धीरे वो गायब होने लगते हैं. जब lubricant नहीं होता है, fold नहीं होते हैं, elasticity of the vagina खत्म होती है, any type of sexual activity becomes very painful. Like because of this pain, the lady starts losing interest in sex whatsoever. She just doesn't indulge in that. So I told you one main cause is less estrogen. Other things of this dry vagina could be that she is having, she may be just depressed. Whenever a woman reaches menopause, she finds she has an empty nest syndrome. बच्चे चले जाते हैं, husband is very busy in his career, she may be alone at the house. Because of that empty nest syndrome, उसको depression होती है. Because of depression also she loses all interest in sexual activity. So हमें खाली menopause को नहीं देखना, हमें और psychosocial reasons भी देखने कि why she is having. और there may be some other medical problem in the lady. उसको heart disease हो सकती है, उसको diabetes हो सकती है, उसको coronary artery disease हो सकती है. She can be having any kind of problem in her, and this can again cause a decrease in the libido and a decrease in the sexual activity. Third reason which I can say a lady को हो सकता है for loss of sexual activity is maybe she's on some medicines, she's on some medication, particularly she's on antihistaminics, she's on some heart medicines, she's on some diabetes medicines. All these medicines, they cause dryness of the vaginal mucosa. Dryness of the mucosa is a hole in our body. और जब इनसे mucosa of the body dry होता है तो जाहिर सी बात है vaginal mucosa will also become dry. That protective layer of fluid is gone, and she can then have dyspareunia, that means pain during sex, and loss of libido, no interest. So how do we remedify it? अब मुझे इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले we have to ask the history in detail. Patient आएगा, we have to take her into confidence, because these are the things she will not go out and just blurt it out to you कि मेरे को ये problem है. You have to make patient very comfortable. When she comes to you, make her very comfortable. Ask her gradually, what is the problem? What is it affecting? Is she having any medical problem? Is she on some medication? If she says that she is not on medication, she is not having any medical problem whatsoever, then we find the root cause of the problem. What is her harmony status with her partner? Is she very irritable with her partner? Is she having the communication levels with her partners? वो उसके साथ वो कैसे हैं? It is always better कि हम दोनों partner, husband wife दोनों को हम बैठ के proper counseling करें. We try to find out what is lacking in them. Maybe the lady को लगता है कि the partner is not looking after her properly. So it is very important कि हम husband की भी proper counseling करें. Suppose हमने ये सारी counseling कर दी. Initially we just try to give lubricants. We just try to give lubricants to the female. We'll tell her कि either you can use vaginal moisturizers. Vaginal moisturizers are water-based gels जो हम vagina में लगाते हैं. It can be applied daily. Or we can also tell her to use lubricants at the time of sexual activity, which could be just KY jelly. They are generally over the top, over the counter. ये सब होता है. So initially, first treatment is we just tell her to go for lubricants or vaginal moisturizers. If still she has problem, उसकी problem persist हो रही है and she is getting no relief, we can go for local estrogen application. So local estrogen creams are available normally by the name of Evelon cream in our country. We tell them to apply that morning, evening for 1 week. Apply it liberally in the vagina एक हफ्ते के लिए, because even हम इसको vagina में apply करते हैं, sometimes this estrogen gets absorbed, and I don't want this estrogen to be कि ज़्यादा estrogen absorb हो जाए and it causes harm to the lady. So हम कहते हैं एक हफ्ता apply करो सुबह शाम. Normally it helps in the rejuvenation of the vagina. The cells जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, and the lady really has relief. Suppose even with the local application of estrogen she has no relief, then what to do? In such cases we can start her on hormone replacement therapy.
Hormone replacement therapy generally helps in the mood swings of the patient. It generally helps in the hot flushes. Vaginal dryness में उसका इतना अच्छा रोल हमें नहीं मिला है. So what I do, suppose my patients are not, उनको उतना रिलीफ नहीं मिला है लोकल एस्ट्रोजन एप्लीकेशन क्रीम से, आई टेल देम कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट में भी उनको स्टार्ट करती हो. एट द सेम टाइम आई टेल देम टू अप्लाई local estrogen cream also locally for twice a day for 1 week. Normally it really helps the patient, and she really starts taking an active interest in her sexual life. What else can I tell her? It is very important that a lady, when she reaches this age, she should have a good physical activity. It is not कि ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नो आई हैव रीच्ड मेनोपॉज एंड मेरी कोई यूटिलिटी नहीं है लाइफ में एंड आई एम कन्फाइंड टू होम. इट शुड नॉट बी देयर, प्लीज नो. शी शुड गो फॉर अ रेगुलर वॉक, शी शुड डू योगा, शी शुड जॉइन जिम. अगर वेट ज़्यादा है, शी शुड ट्राई टू ब्रिंग हर वेट इन टू कंट्रोल. वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन सबसे दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि इफ़ शी इज़ हैविंग एनी डायबिटीज़, इफ़ शी इज़ एनी कार्डियक प्रॉब्लम, इन सब में भी बहुत असर पड़ेगा. उसकी ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक लेसन हो जाएंगी अगर उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी. दूसरा क्या होगा कि मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन लैग. इफ़ यू डू रेगुलरली, अगर आप कोई एक्सरसाइज अपनी रिजीम फॉलो करते हो, बी इट ब्रिस्क वॉक, बी इट योगा और बी इट जिम, आप योर मसल्स टेंड टू बिकम स्ट्रॉन्ग, योर बोन्स टेंड टू बिकम स्ट्रॉन्ग. दैट ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसका एलिमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है. So this is very important, ladies, that once you hit your perimenopause, please you start taking care of yourself. अगर आपने अभी तक अपना ध्यान नहीं रखा, this is the right time कि you look at yourself, start taking care of yourself, keep your weight under control, see to it कि आपका थायराइड ना ज़्यादा बढ़े. Once you start doing your regular exercises, आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगी. अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हो, आपको बिना मेडिसिन के आप कंट्रोल हो जाओगे. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी अट्रैक्टिव. आपको लगेगा जैसे जैसे आपका वेट शेड होगा, 5 किलो वेट कम करने से आप 10 साल यंगर लगने लगते हो. सो दैट गिव्स यू एन इमेंस बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस. यू नो, योर कॉन्फिडेंस लेवल रीचेस अ पीक और आपको लगता है यस, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फॉर अ गुड सेक्शुअल एक्टिविटी. आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज रिजीम होना चाहिए. तीसरी थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, न्यूट्रिशन. एट मेनोपॉज न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. न्यूट्रिशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आप नॉन वेज हो, बहुत अच्छी बात है, आप अंडे लो, आप वाइट मीट लो, चिकन, फिश. बट सपोज यू आर वेजिटेरियन, स्टिल आई वुड लाइक कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो. आप दूध तो लो ही, पनीर लो, कर्ड लो, स्टार्ट सम कैल्शियम सप्लीमेंट्स. अगर आपको हॉट फ्लैशेस वगैरह बहुत हैं तो हम वो सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें आइसोफ्लेवॉन्स होते हैं. एंड दीज आइसोफ्लेवॉन्स टू सम एक्सटेंट रिड्यूसेस दिस हॉट फ्लैशेस, रिड्यूसेस द मूड स्विंग्स, रिड्यूसेस द इरिटेबिलिटी. सो न्यूट्रिशन plays a very important role at this age. At this stage of life, nutrition plays a very important role. So 3 main things I have discussed. One is your physical activity, one is your nutrition. Third thing, your communication with your partner, very important. If you have a very good communication with your partner, ये problem arise ही नहीं होगी. Fourth thing which I would like to suggest कि go to any local gynec. Whenever you reach perimenopause, menopause, अपना रेगुलर गायनिक चेकअप कराओ. नॉर्मली भी से कि आप अपना पैप स्मीयर कराते रहिए. अगर आपका पैप स्मीयर ठीक आता है, एवरी 2 years you get पैप स्मीयर until you are 60 years of age. रेगुलर गायनिक चेकअप से क्या होता है कि वी विल सी कहीं कोई विजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड, कोई पॉलिप, कोई ओवेरियन सिस्ट, ये सब एक गायनेकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है. सो वंस यू रीच पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, रूटीन गायनिक चेकअप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड, दिस इज what I wanted to discuss with you today. So take home messages, never be depressed, keep yourself occupied, have good physical activity, take proper care of your nutrition, have confidence in yourself. No negative thoughts in you whatsoever. कभी negative thoughts आने नहीं दो. Always think positive. Your communication with your partner should be open. अगर आप ये सब follow करोगे, I'm 100% sure ये problem आपको menopausal problems, especially sex related, नहीं आएंगी. फिर भी अगर sex related problem है, openly जाओ, gynec से discuss करो. And initially with lubricants and vaginal moisturizers, 80% of the patients have a relief.
So friends, this is all for today. Next week, next Saturday, I'm going to come again with a very controversial topic, which again I had lots of queries: unprotected sex and the chances of pregnancy. This is a very controversial topic and a very important topic for my younger audience. I want you to please listen to it. Okay, whenever you have an unprotected sex, how to avoid pregnancy. So guys, bye, take care, have a nice day.